Okay, so in probability, today is our first class of introduction. And in introductory part, I would be talking mainly about whatever concepts, theory, formulas are already known to you, right? But that is a base for understanding the new concepts which will be further introduced in your chapter number 13 of NCRT textbook. The chapter actually carries a weightage of 8 marks in your board examination. There are a total of 3 major subtopics, in fact 4 major subtopics that we will be talking very soon in due course of time. But before that, let us recall what we have already studied in 9th class or maybe 10th class and then 11th class. So in probability, the experimental approach. Remember, there were 2 different approaches in class 9th. It was introduced, and we had followed experimental and theoretical approach. So experimental approach simply means we find the probability of the occurrence of event by actually performing the experiment. So that is a keyword over here, actually performing the experiment a number of times. An adequate recording of the happening of event is being taken. But the point is it every time feasible and possible? Can I toss a coin 100 times, 1000 times, and then write and maintain a proper record and then come to the conclusion? So what happened after the development of experimental approach in probability? It was observed that when you go for, say, again, a tossing of a coin, and I go for 100 times, for example, so out of this, it was found that roughly 50% of the time head is occurring and roughly 50% of the time tail is occurring. It may be a different also, right? But most of the time different persons, and when 100 coins, then say 200 coins, 1000 coins. So it was more or less the similar thing. Then it was developed the theoretical approach. So wherein we try to predict what will happen without actually performing. So now we have learned a basic rule, and theoretical probability means this formula, which every one of you is well aware of, right? So anyway, third point, an outcome of a random experiment is called the elementary event. So there is an experiment, it will have many events which may be defined. Getting an odd number, getting a prime number, drawing the ace card. So these are certain examples of the event in various cases. And then in the theoretical probability, which is also referred to as a classical probability, the probability of an event E is defined by the following formula. You are well aware of it. Number of outcomes favorable to E upon total number of possible outcomes. Followed by sixth point, the probability of an event, fifth point, probability of impossible event 0, sure event, it is 1. Then probability of real number always lies between 0 to 1. An event having only one outcome is called elementary event. And then the sum of probability of all the elementary events of experiment is 1. These are our basic understanding already studied. And followed by the last point on this sheet, eighth point, for any event E, P of E plus P of not E, E bar actually refer to the not E, right? So this is always equal to 1. The probability of head plus probability of tail, that will of course always equal to 1.
Now, certain important cases in probability, the total possible outcomes when a coin is tossed n times, it is 2 raised to the power n. We will be focusing on this coin problem, the dice problem, and the card problems. So these are the three main category. Of course, there are many other possibilities too, which we will discuss. So 10th point, the total possible outcomes when a die is thrown n times is 6 raised to the power n. So imagine a situation if a die is thrown only one time, n is 1. So it is only 6 power 1, which is 6. So what are the possible outcomes when a die is thrown only once? 1, 2, 3, 4, 5, 6. But in case if it a die is thrown 3 times, we know it will become 6 square, which is 36. And in case of a playing of a card, right? So I'm not encouraging you to go for playing for the cards, online or offline. But at the same time, in case of probability, one should be aware that if there are 52 playing cards, they are divided into 4 different suits referred to as spade, club, heart, and diamond. Spade and club, they are black in color, and the other two are red in color. कार्ड्स इन ई सूट आर, अब जो ये 13 कार्ड्स हैं इन्हें कैसे डिवाइड करा? दे कंटेन एस, किंग, क्वीन, जैक, followed by the number cards 2 to 10. Then kings, queens, and jacks, they are called the face card. So please recall these basic ideas. I'm waiting for a minute. Okay. So when we talk about a coin, so recall in case of a coin, if you had only one coin, then of course the possible outcomes were head or tail. In case you had two coins, there were 4 possibilities: head head, head tail, tail head, and tail tail. Please do remember them in a specific order only. Or 3 coins, we had 8 cases. What were all 8 cases? Starting with H. Better rahega like this. So 4 times you write H, and then followed by 4 times T. Or after this H, you just do the embedding of these 4. So HT, TH, and TT. Same way over here. HH, HT, TH, and TT. Even if we had 4 coins, so we know there will be now total of 16 cases. So in case of 16 cases, क्या करते हैं? H is considered 8 times, T is considered 8 times. बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप zigzag मैनर में लिखने लग गए, it will be a troublesome. तो एक ऑर्डर में H को लिख दिया 8 टाइम्स, और अब जो ये 3 वाले केसेस थे, जस्ट इनके आगे
स्पेसिफिक इसी ऑर्डर में एम्बेडिंग कर दीजिए। पहले एच वाले कॉलम को लिख दिया एंड देन दी अनदर वन विच इज टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच एंड टी 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 फॉलोड बाय दिस। सो इन 12th क्लास हम मैक्सिमम जो एक तरह से बात करेंगे that is when there were the 4 coins are tossed। इवन पॉसिबिलिटी की बात करें तो 5 कॉइन हो या इवन 10 कॉइन्स, we can talk about that in 12th itself, but in a reduced syllabus that portion is removed now, right? Next, let me talk about the die problem. So if you had one die, तो वन डाई के केस में आई नो माई सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय कैपिटल एस, 1 2 3 4 5 6, and in case I have two dice, so this is a plural to the word dice, तो इस केस में द सैंपल स्पेस विल कंटेन 16 एलिमेंट्स, ओ सॉरी 36, और वो कैसे होंगे? वन के साथ क्या क्या आ सकता है? 1 3, then 1 4, 1 5 and 1 6 followed by 2 1, और फिर आपको पता है ये लॉजिकल है, यू आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू राइट एवरीथिंग, लिख के दिखाते हो आपकी चॉइस है, बट ये कॉमन सेंस में रखेंगे सो दैट आई एम अवेयर कि हाँ यहाँ क्या लिखा गया होगा। एंड देन मैक्सिमम हम 3 डाइस तक, और वो भी लॉजिकल बात करेंगे, बिकॉज 3 डाइस में 216 केसेस हो जाएंगे विच विल बी डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, तो उसे हम लॉजिकली डील करने वाले हैं। 2 डाइस में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फ्यू एग्जांपल्स विल फॉलो। और फाइनली जब हम बात करेंगे अबाउट दी कार्ड प्रॉब्लम्स, तो कार्ड में अब हम ऑलरेडी ये जानते हैं, ये 13 के सूट्स की बात करी गई है, आउट ऑफ विच आवर जैक, क्वीन एंड किंग, दे 3 आर रेफर टू एज दी फेस कार्ड्स। दो अगर मैं इस सेट के अंदर एस को इंक्लूड कर देता हूं, माने 16 कार्ड्स का कलेक्शन हो गया, तो एस को इंक्लूड करते ही इनका नाम हो जाता है ऑनर कार्ड्स, बट दिस टर्म इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट जस्ट फॉर आवर जनरल नॉलेज, आपको अगर पता हो तो इट इज गुड। तो फेस कार्ड्स इफ इंक्लूडिंग दी एस, जिसको इक्का कहते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके ऑनर कार्ड्स। फिर इनके कलर्स क्या हैं, कितने क्वीन है, किंग है, ऑफ कोर्स वन शुड नो ऑल दोस बेसिक थिंग्स, कि उसी को हम फर्दर यूज करने वाले हैं। certain formulas now, first second already discussed, आप प्लीज चेक करते चलिए। probability of not A is 1 minus probability of A। थर्ड फार्मूला हमने क्लास 11 से पढ़ना शुरू किया था, फॉलोड बाय ऑल द फॉर्मूलाज इन 11th क्लास, सो प्लीज चेक इट आउट। P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B, और फिर एक टर्म आई थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If A and B are mutually exclusive, then which means they have nothing in common, और उस केस में P of A intersection B will become 0. Another very important formula is fifth one. जनरली हम इसे भूल जाते हैं, बट इसमें बेस्ड आपको 12th में भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत। P of not A इंटरसेक्शन B, वो होता है P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B।
इवन अगर मैं मान लो आपसे ये कह देता ए इंटरसेक्शन नॉट बी की अगर बात होती, तो that will be P of A minus P of A intersection B. One can easily understand how we got this formula. जहां भी डाउट लगे, you may always imagine the set theory, class 11, Venn diagrams. So probably उससे आपको कुछ चीजें याद आती रहे कि हम कैसे इनके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग किया था, नॉट द प्रूफ्स, बट एटलीस्ट वन कैन इजीली अंडरस्टैंड यूजिंग द वेन डायग्राम कि ये फॉर्मूलाज कैसे आए थे, बट आपको यहां डायरेक्टली याद करने हैं. Sixth and seventh formula I generally do not recommend to learn, though they may be required. 11th में ज्यादा यूज हुआ था. Probability of occurrence of exactly one of A and B, and if there are three events ABC, then P of A union B union C will take this particular lengthy form. So कम से कम चलो 7 तो आप याद कर लीजिए, 6th लॉजिकली हम सॉल्व करने वाले हैं. Please check out this one solved example here. A coin is tossed twice. If a second throw results in tail, then a die is thrown. So there is a condition applied over here. दो बार कॉइन को टॉस करा तो ऑफ कोर्स हेड या टेल आएगा, बट कह रहे हैं अगर सेकंड थ्रो में टेल आ गया, वो तब की बात करेंगे. पहले तो दो कॉइन टॉस करो, क्या क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, ठीक है. बट जैसे ही इन्होंने कहा सेकंड थ्रो में जैसे ही आ गया टेल, तो टेल आया सेकंड थ्रो में. ये देखो यहां पर इस थ्रो में, सेकंड थ्रो में आपको पता चल रहा है टेल आ गया. फिर क्या करा, डाई इज थ्रोन. तो डाई को थ्रो करोगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा. नहीं तो क्या हो सकता था, पहले में मान लो टेल और दूसरे में भी टेल आ जाता. तो हमें तो है कि अगर सेकंड में टेल आ जाए, तो सेकंड में टेल तो देखो इन सभी केस में भी दिख रहा है, तो फिर से डाई को थ्रो कर दिया, फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6. Writing of this way the sample space is actually important. एक दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टाइप के हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी आने वाला है टॉपिक 12th का, द वेरी फर्स्ट टॉपिक विद विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वहां पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग द सैंपल स्पेस विच यू डिड इन क्लास 11th का याद करिए. द फर्स्ट एक्सरसाइज only they were focusing on how to write the sample space. और याद रखिए sample space finite भी हो सकता है and it may also be infinite. तो what will be the effect of being the infinite sample space, वो अब हम 12th में बात करेंगे. Check out the another definition with one example. Though I have already used this term in a previous slide, mutually exclusive events if they have nothing is common. तो उनका इंटरसेक्शन 5 है. एग्जाम्पल, डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6. बस अब कुछ इवेंट्स देखो डिफाइन कर दिए, E1 एंड E2. इवेंट E1 क्या है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 3. E2 क्या ले लिया, गेटिंग अ नंबर मोर देन 4. तो अब आप इस डेफिनेशन से ये तो अब आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू कैन राइट वेरी इजीली. और अब आप चेक करिए इनका इंटरसेक्शन इज नथिंग, hence they are mutually exclusive events.
You ऑलवेज राइट इन अ चैट बॉक्स और अनम्यूट योरसेल्फ अगर कहीं कोई भी डाउट आपको आता है। अब एक साथ में एडिशनल टर्म आ रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने देख लिया, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। तो किसी एक सैंपल स्पेस में मान लो आपके पास इवेंट्स हैं E1 E2 करते करते En, then we say they form a mutually exclusive and exhaustive system if they are mutually exclusive, means they have nothing in common, very first thing, ये तो हमें पता ही थी। सेकंड कंडीशन क्या है, union of all the sample space, oh sorry, these events is the sample space itself, union of all the sample space. So this is the another representation for this union। जैसे याद करिए हमने सबमिशन में पढ़ा हुआ है ना, स्टैट्स के अंदर सबमिशन का हम साइन यूज करते हैं, I is equal to 1 to and something like this, same way we can use this notation। तो कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलने वाला है। तो दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाती हैं, देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स का सिस्टम। एग्जाम्पल पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं भूल गया, इसी के ऊपर ओवरराइट हो गया। यस, प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आंसर की बात करूंगा। टू डाइस आर रोल्ड, तो इतने से ही सिचुएशन से सैंपल स्पेस माइंड में आ जाता है। 36 केसेस होंगे, 1 1 1 2 1 3 करते करते ऐसे 6 1 6 2 अप टू 6 6। फिर कह रहे हैं ए क्या इवेंट है, सम ऑफ द नंबर शोन ऑन टू डाइस इज 5। ए तो सिंपल इवेंट है कि सम ऑफ द नंबर्स जो है वो 5 है। तो आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू कैन इमेजिन के इवेंट ए क्या रहा होगा। सम ऑफ द नंबर इज 5, तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज 1,4, फिर 2,3, 3,2, 4,1, तो ये 4 केसेस। ऐसे ही बी क्या है इवेंट, एट लीस्ट वन ऑफ द डाई शोज अप 3, कम से कम एक डाई के ऊपर तो 3 आना ही चाहिए। तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या ये एग्जॉस्टिव है? तो इसके लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है सर। ओके, चलिए चेक करते हैं। सिंपल सिचुएशन है, चेक इट आउट। सिर्फ मेन था इवेंट्स को डिफाइन करना, ए ये हम देखे जो कहते हैं सम एस 5 वाला केस है। बी क्या था, एट लीस्ट वन डाई शो 3, तो 3 1 3 2 3 3 करते करते ये वाले केसेस। फिर 1 3 2 3 4 3, भाई सेकंड वाले का भी तो 3 आ सकता है। तो चेक कर लीजिए, ए और बी लिखे गए, ये लिखना आप 10th में ही सीख चुके हैं। फिर 11th की ये डेफिनेशन से हमने देखा था, आपको इनका इंटरसेक्शन निकालना आता है, वो 5 नहीं है, हेंस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इनका यूनियन देखा, आप इनका यूनियन करिए
क्या वो सारे 36 केसेस मिलेंगे मुझे? क्या वो सारे 36 केसेस इसमें हैं? एक्चुअली नो। कोई भी एक केस सोचिए आप, जैसे मान लो मैंने कहा 6,6, 6,6 है, वो इस 36 का पार्ट है, बट वो इनके यूनियन में नहीं आ रहा है, तो इनका यूनियन इज नॉट द सैंपल स्पेस, hence they are also not mutually exclusive. ऐसे इवेंट्स बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हो। 12th क्लास में एक टॉपिक आने वाला है बेस थ्योरम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक्सपेक्ट करेंगे इनफैक्ट बोर्ड में कि वहीं से आ जाए इस बार, तो उसमें ये वाला So मेन कॉन्सेप्ट यूज is this होगा। possible that mutually exclusive ना हो और exhaustive हो या फिर vice versa? यस एग्जैक्टली, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ये 11th का आपको याद दिलवा देता हूं, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज, वो टोटली डेडिकेटेड थी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो हो सकता है सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए बट एग्जॉस्टिव नहीं हो, एंड एज यू राइटली सेड वाइस वर्सा इट इज आल्सो पॉसिबल। तो एग्जांपल टू एग्जांपल इट विल वेरी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 10th में ही करा हुआ है या मे बी इसे आपको याद लगे 11th में, आई एम वेटिंग। सो मेरा पर्पस अब इसको सॉल्व करना नहीं है, बट पॉइंट इज दिस इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग। ये तो बेसिक एज्यूम करके चलेंगे कि आप सभी को आती है, तभी 12th के अंदर हम और नए कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। So soon I read two dice are thrown simultaneously. वही 36 केसेस की बात हो रही है। Find the probability of getting a doublet. Doublet का मतलब anyone? सर दोनों डाइस वन सर वन टू वन 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 थ्री वन फोर वन टू थ्री थ्री फोर वन फोर वन फाइव टू टू फाइव थ्री सिक्स थ्री सिक्स। Yes. 1 1 2 2 3 3 वो सब आ जाएगा इसके अंदर, and any one number as a sum, prime number as a sum, multiple of 3 as a sum. Check out the solution to first 4 parts. ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा हो गया, बट आई एम श्योर आप मोबाइल पे इसको अगर थोड़ा सा, अगर मोबाइल पे अटेंड करते हैं क्लासेस, तो जूम इन कर सकते हैं। The presentation is equally important. How you are defining the events, writing the sample space, mentioning the formula. तो ये तो क्लियर है, हर एक के अंदर आपको 36 से डिवाइड करना होगा प्रोबेबिलिटी में। Check out for the other parts also quickly. तो आई एम श्योर ये याद आ चुका होगा सारा, ये क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद।
क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इस तरह की चीजें 10th 11th में करी हुई हैं। तो जिन्हें थोड़ा डाउट रहे तो आई वुड अर्ज प्लीज चेक आउट 10th क्लास एंड 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी, बेसिक बेसिक आइडियाज एटलीस्ट सॉल्व एनसीईआरटी और वट एवर, ताकि यहां इजी रहे चीज। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। From a well shuffled deck of 52 playing cards, a card is drawn. अभी तो 10th का क्वेश्चन है, क्योंकि एक कार्ड ड्रॉ करवाया गया है। 11th में हमने 2 कार्ड या 3 कार्ड्स ड्रॉ करवाए थे, उससे भी समझ चुके हैं। बट अभी तो बेसिक चीज है, अ कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड एंड अ किंग। एंड अ किंग, एंड का मतलब रेड भी हो और किंग भी हो। व्हाट इज द आंसर? 1/26. 26. ओके, गुड। तो 2/36 हम इस तरह से प्रेफर करेंगे कुछ बोलना। 2/52 and then Oh, 1/20. sorry, 2/52. Yes. Check out the solution. So it's a simple solution. Three dice are thrown together. 216 केसेस की बात हो रही है, तो वो तो सारे केसेस हम नहीं सोचते। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 6। ये क्वेश्चन एक्चुअली 12th में भी हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर समझ आ जाता है यहीं पर तो इट इज गुड, नहीं तो बाद में डिटेल में आ जाएगा। चेक इट आउट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 6 में कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? लॉजिकली सोचे 3 डाइस हैं, तो कम से कम तो सम 3 आ सकता है, तो 1 1 1। और फिर सोचा सम 3 वाले केसेस तो एक ही हुआ, सम 4 वाले कौन कौन से होंगे? सम 4 वाले देख लो, यही केसेस आ रहे हैं। और फिर सम 5 वाले, ये केसेस। तो इतने केसेस तो आप लॉजिकली सोच के लिख सकते हैं। तो बस आपने क्या करा, गेटिंग अ टोटल ऑफ 3 4 5 करके वो आपने माइनस कर दिया फ्रॉम द टोटल केसेस। रिवर्स थिंकिंग यहां यूज किया है। So I will be sharing of course the presentation with you. आप अपने आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। थोड़ा सा क्विकली बढ़ते हैं। Again a very simple question. 2 dice, find the probability of getting a doublet or a total of 6। अब ये 11th क्लास का कंसेप्ट आ गया। डबलेट वाले केसेस सोच लिए, टोटल ऑफ 6 वाले सोच लिए, बट उसमें अगर कोई केस कॉमन आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। एज डबलेट भी हो और टोटल ऑफ 6 हो, देयर इज अ वन केस विच इज कॉमन।
तो ये वाली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखिए लगेगा यहाँ इस केस में। Cards marked with the numbers 2 to 101 are placed and mixed in a box or mixed thoroughly. One card is drawn, find the probability of this and this. So lot many cards can be asked. I have a simple question for you. How many cards are these? 2 से लेकर 101 तक कितने cards हैं? 100. सो व्हाट फार्मूला? एक तो लॉजिकली जब आप सोच पा रहे हो इट इज गुड, नहीं तो क्या करते हैं अगर कॉन्जिक्यूटिव में हो, बी माइनस ए लास्ट वाला फिर पहले वाला प्लस वन, बी माइनस ए प्लस वन, so there are 100 such cards. Now you can check out the solution. इवन नंबर 2 से लेकर 101 तक कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो सिंपल पाथ्स हैं, 10th क्लास का क्वेश्चन है। सो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स। एक मिसकंसेप्शन आई एम श्योर आपके साथ नहीं है। प्राइम नंबर की जब मैं बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. इट इज 2। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन 2 डाइस, डबलेट और ये सब सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन चेक आउट इन योर होमवर्क। Again 2 cards. This is I think the last question which I have taken. अब ये 11th class based है क्योंकि 2 cards are drawn. बट अब 2 cards में ड्रॉ जब करे हैं तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट भी हो सकते हैं और विद रिप्लेसमेंट। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा वी ऑलवेज एज्यूम विदाउट रिप्लेसमेंट। डिटेल में ये 12th में आएगा। So this is all for today. If you have any doubt, you can ask. Okay, ठीक है फिर. You can leave the meeting. Have a great day. Yes, quickly leave the meeting. Jayaditya, Keshav, Krish, Ramneet. Keshav and Krish. Keshav, Krish,